हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है नेचुरल वेजिटेशन। ऑप्शंस आर कल्टीवेटेड क्रॉप्स, कल्टीवेटेड फ्रूट्स, ऑर्चार्ड्स और फॉरेस्ट्स। आंसर इज फॉरेस्ट्स, क्योंकि जो वेजिटेशन नेचुरली ग्रो की जाती है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जबकि कल्टीवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स और ऑर्चार्ड्स जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ग्रो होते हैं, तो इसलिए वो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट स्पीशीज India occupied which place in the world? Options are 6th, 4th, 10th or 1st. Answer is 10th. Next question is how many types of flowering plants found in India? Options are 10,000, 12,000, 15,000 or 47,000. Answer is 15,000. Next question is term exotic plants used for the plants. Options are which are purely Indian, or which are endemic, or which come from outside India, or forest plants. Answer is which come from outside India. Next question is the undulating and rough terrain areas provide. Options are grassland, woodland, or shelter to variety of wildlife, or all of the above. Answer is all of the above. Next question is usually conical trees grow on. Options are plateaus, the hill slopes with some depth of soil, or plains or dry regions. Answer is the hill slopes with some depth of soil. Next question is which type of soil support mangroves? Options are deltaic soil, dry soil, sandy soil or concrete. Answer is deltaic soil. Next question is the characters and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with. Options are humidity in nature, precipitation, soil or all of the above. Answer is all of the above. Next question is trees grows faster in. Options are summer season, winter season, autumn season or rainy season. आंसर इज समर सीजन। क्यों होते हैं समर सीजन में फास्टर ग्रो? क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होता है। बिकॉज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज तेजी से और जल्दी से ग्रो होते हैं समर सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो इन द एरियाज हैविंग रेनफॉल। ऑप्शंस आर 20 सेंटीमीटर or more than 200 centimeter or less than 100 centimeter or between 22 to 50 centimeter. Answer is more than 200 centimeter. Next question is teak and sal grows in. Options are tropical evergreen forest or tropical deciduous forest or montane forest or mangrove forest. Answer is tropical deciduous forest. Next question is natural vegetation grow in the region with less than 70 centimeter of rainfall is. Options are thorny trees and shrubs or sandalwood or palm trees or mosses and lichens. Answer is thorny trees and shrubs. 70 cm से कम रेनफॉल जहाँ पर होता है वहाँ पे thorny trees and shrubs होते हैं। Next question is Sundri trees are found. Options are Ganga Brahmaputra Delta or tropical forest or temperate forest or dry regions. Answer is Ganga Brahmaputra. Next question is Tundra vegetation consists of. Options are pines, oak trees or palm trees or mosses and lichens.
Answer is mosses and lichens. Next question is the only country which has habitat for tigers and lions both is. Options are China, America, India or Pakistan. Answer is India. Next question is Gir forest in Gujarat is the natural habitat of. Options are the tigers, Indian lions or leopard or wild ass. Answer is Indian lions. Next question is how many species of plants are extinct? Options are 10 species, 20 species, 30 species or 40 species. आंसर इज 20 स्पीशीज। 20 स्पीशीज जो है प्लांट की वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व दैट हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट इट्स फ्लोरा एंड फौना आर। ऑप्शंस आर 25, 14, 59 और 30। आंसर इज 14। Next question is dash national parks are set in to take care of natural heritage. Options are 50 or 35 or 89 or 100. Answer is 89. Next question is tigers are found in. Options are Madhya Pradesh, West Bengal, Himalaya region or all of the above. Answer is all of the above. That is all for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए